Friend, let me tell you, I was there when this law got launched. I have spoken hundreds of hours, means multiple sessions on telemedicine guidelines. I have supported lots of aggregators who jumped in for the business. I found that my doctor was exploited a lot. Hence, I tied up with some of the software to provide my medical legal service to them. For my doctors who are doing a teleconsultation or their aggregator, because liability to all India होगी, तो liability के लिए I have provided my services, but I promised, I taken a promise from them कि you will not going to exploit my doctor. तो ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो आप आज भी डाउनलोड कर सकते हो. मैं आपको एडवाइस करता हूँ 2 सॉफ्टवेयर का. एक है कंप्लीट वेलनेस करके. कंप्लीट वेलनेस सॉफ्टवेयर अभी भी आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो प्ले स्टोर पे आपको डाउनलोड करना है आपके एंड्रॉइड फोन पे. आईओएस पे भी ये वीक में अवेलेबल हो जाएगा, तो आप आईफोन पे भी नेक्स्ट वीक से कर सकते हो, इस वीक से एंड्रॉइड पे कर सकते हो. अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए. आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका बाकी चीजें उसके अंदर रजिस्टर करना स्टेप बाय स्टेप बताया गया है. एंड देन बी अ सर्विस प्रोवाइडर फ्री ऑफ चार्ज. आपको कोई कॉस्टिंग नहीं है उसमें, मतलब आप लोगों के लिए है. उसमें टाइमिंग का स्लॉट आपको सिलेक्ट करना है कि जब आप पेशेंट देखना चाहते हो. आपको फीस खुद की सिलेक्ट करनी है, जो भी आप प्रोफेशनल चार्ज लेना चाहते हो. आपके बैंक अकाउंट होंगे, आपके अकाउंट में रिमिट होगा. दैट सॉफ्टवेयर इज बैक्ड बाय माई सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स. मेडिको लीगल सर्विस मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कहीं भी कुछ भी टेलीकंसल्टेशन में मेडिकल लॉ आएगा तो आई एम देयर इफ यू आर बीन पार्ट टू दैट. कंप्लीट वेलनेस में एक बेनिफिट आपको है कि दे आर गोइंग टू मार्केट फॉर यू ऑल्सो in addition to your own marketing to cater the patient across the country by charging you some amount. लेकिन दूसरा भी एक सॉफ्टवेयर है, simultaneously you can download both the software. Other software is a direct doc करके है. डायरेक्ट डॉक का सॉफ्टवेयर आप एंड्रॉइड पे, iOS पे, आईफोन पे डाउनलोड कर सकते हो. उसमें भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट डॉक में आपको 80 to 90% स्टेक आपका मिल जाता है विदाउट एनी चार्ज. 10 to 15% जो भी चार्ज करती है एग्रीगेटर, वो सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, सॉफ्टवेयर मेंटेन करने के लिए, क्लाउड मेंटेन करने के लिए आपसे चार्ज करती है, सो दैट यू कैन डू अ फ्रीली बिजनेस इन दिस कंट्री बाय टेकिंग योर ओन चार्ज. तो आपके कंसल्टेंट्स भी इतनी है कि आपके पास अगर मान लो पेशेंट है जो आपके यहाँ दिल्ली से आया हुआ था और रिजल्ट अच्छे मिल गए थे और आपने उसको बोला, तो उसके दिल्ली के बहुत सारे कॉन्टेक्ट है जो आपको टेलीकंसल्ट पे ज्वाइन कर सकता है. तो अक्रॉस द कंट्री जहां भी आपके रिलेटिव पेशेंट के आपको कनेक्ट कर सकते हैं. योर प्रैक्टिस कैन इंक्रीज. सो टेलीमेडिसिन इज अ लॉ नाउ इन अ कंट्री. पोस्ट क्रिमिनल लायबिलिटी पोस्टेड ऑन अ डॉक्टर अंडर 304. फिर से मैं रिपीट करूंगा फ्रेंड, criminal liability, never ever get worried, because criminal liability you are protected. You cannot be arrested on the spot, and at the end of the day, since intention plays a vital role and it is unintentionally done, objective and motive was not there, you can be protected well under the law. So criminal liability not to worry. Civil liability पे talk, सिविल लाइबिलिटी के बारे में. अब मैं क्रिमिनल लाइबिलिटी थोड़ी सी आपको नर्सिंग होम के हिसाब से बता दूं बिफोर आई प्रोसीड टू सिविल लाइबिलिटी. नर्सिंग होम को अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं तो नर्सिंग होम में हायरार्कीज रहती है. बहुत सारे नर्सिंग होम जो रहते हैं वो डायरेक्टर बॉडीज के रहते हैं. दैट कुड बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी owning the hospital. There could be possible the proprietaries company. There is a possibility that partnership company. There are possibilities that it is a trust or NGO type of people who are holding the company. Now, if I talk about these people, you all are safe in criminal liability. Your criminal liability is not going to be there unless you are directly involved in the treatment of a patient. So criminally you are not going to be there. You are protected. आप मेडिको हो या नॉन मेडिको, anyone can run a hospital. So you are protected as a owner of the hospital. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? ट्रीटिंग डॉक्टर पे. आपके हॉस्पिटल पे जो विजिटिंग कंसल्टेंट है उनके वजह से कुछ होता है, अनपुलिस सब कंप्लेन होती है, इंक्वायरी होती है, सब जब फाइनली रिपोर्ट्स आता है, रिपोर्ट्स अगर अगेंस्ट में जाए तो देन इट इज अ ट्रीटिंग डॉक्टर. यू बीइंग अ ओनर एंड ट्रीटिंग डॉक्टर, देन यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल. But if I talk about criminal liability, the liability is going to be only for the purpose of the treatment involved in treating. Now, what are other liability can come to criminal liability? Friend, बहुत सारे cases मेरे पास आए. I'll give a one or two example to make you understand कि how directors are liable in criminal liability, how owners are responsible even if they are not treating a doctor. Now you have appointed a doctor without verification of their certificate. I have got a case where one guy
who was working with orthopedic surgeon for years. He was actually instrument supplier, implant supplier. So initially, for supplying an implant, he was continuously giving a service of supply of implant and use of the same. So he used to remain in OT with various orthopedic surgeon multiple times where implant was posted. ये due course में क्या होगा? He becomes so smart in surgery because of continuous learning, and he started doing independent surgeries. और एक रिमोट में हॉस्पिटल में ही गॉट कनेक्टेड, रिमोट में गया, हॉस्पिटल से कनेक्ट हुआ, हॉस्पिटल को अपना रिक्वेशन दिया एंड हॉस्पिटल उसको ऑन बोर्ड कंसल्टेंट करके रखा, लेकिन हॉस्पिटल वाज नॉट अवेयर एंड हॉस्पिटल हैज नेवर थॉट ऑफ आस्किंग द रजिस्ट्रेशन बाय द डॉक्टर फाइन. तो बीइंग अ बोगस डॉक्टर हैविंग नॉट रजिस्ट्रेशन, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग देयर. एक दिन एक पेशेंट का डेथ हो गया एंड डेथ होने के बाद वो यू क्राई हुई, पुलिस कंप्लेन हुआ, and police complaint होने के बाद ये बंदा भाग गया and when investigation was done, it was found that he was not holding any medical registration, and if at all you have appointed such a person, then criminal liability comes to you also. It is hand and gloves, friend. So you are going to be responsible. Secondly, very recently I've taken a bail where this hospital had appointed a medical student as a RMO. I was surprised to see that hospital ने RMO को appoint कर दिया, being a medical student, without verifying the medical registration of this guy. And then one fine day, someone has raided in hospital knowing that he was not a doctor. Dummy patient गया, उसने prescription लिया, prescription लिखने के बाद उस बंदे को arrest किया, and now the hand has gone to the director and owner of the hospital. So not verifying the credential and appointing a doctor, definitely you hold the criminal liability. दूसरे टाइप का केसेस जो आपको बताऊं, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ के इश्यूज आते हैं, आई हैव सीन दैट थेफ्ट हैज हैपेंड इन हॉस्पिटल. थेफ्ट मतलब पेशेंट का बैंगल निकाल लिया, एनेस्थीसिया में थे तो पेशेंट का और कोई वैल्यूएबल्स निकाल लिया. बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं वेयर पैरामेडिकल स्टाफ्स आर इन्वॉल्वड. इन सच ए केसेस व्हेन द क्रेडेंशियल नीडेड, अदरवाइज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. अगर क्रेडेंशियल अच्छा है तो फॉर द क्राइम ऑफ द नर्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, फॉर अदर थिंग यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. लेकिन अगर उस वक्त भी आपने क्रेडेंशियल्स प्रॉपर नहीं किया है, उसके बैकग्राउंड को आपने प्रॉपर चेक नहीं किया, तो डेफिनेटली यू हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बिकॉज कॉमन intention of crime, the 34 of IPC definitely brings and comes in a picture, depend upon the scenario, situation in the hospital and everything. Violence के टाइम पे बहुत बार मैंने देखा है हमारे हॉस्पिटल वाले बॉडीगार्ड तो को अपॉइंट कर देते हैं, एंड बॉडीगार्ड ने किसी को इंजर्ड कर दिया, मॉब आ गई, उसने इंजर्ड कर दिया, and if he get arrested and he says that I have acted on the order of owner of the hospital, then you also come as a common intention, 34. So various aspect definitely comes in nursing home when I talk about criminal liability. When I talk about the criminal liability in respect to the treatment of the patient, when I say treatment of the patient, where the medical negligence per se comes, then you can be safeguarded in every criminal liability to the extent of treatment you are given. I'll give one more example before I proceed to civil liability. There was a case of MD medicine doctor who has admitted a patient for thrombocytopenia due to malaria. Patient become critical, patient was in ICU, and doctor has recommended blood transfusion to the patient. RMO on duty was there, and doctor who has ordered a blood to the patient's relative who had went to blood bank and brought a blood at around 6:30. Second was around 8:30. Third was around 11 o'clock. And but 6:30 blood was not given. Around 8:30 when blood was brought 9 o'clock, doctor went to ICU and transfused the blood. During the transfusion, patient was already critical. Patient succumbed to death, could not be resuscitated. Relative have done a hue cry, and relative though they are the layman. उन्होंने बोला कि पेशेंट हमारा अच्छा था लेकिन गलत ब्लड चढ़ाने की वजह से मर गया, because patient died during the transfusion. So that was a context and concept in the mind of relative that patient died because of the wrong blood transfusion. Feared with these words, this RMO, I don't know why got shaken. Doctor may not be contactable, I don't know. He gone back. He has found that he has taken a blood of 6:30, but he has removed all the paper which was an IPD of 6:30 blood,
he has thrown that bottle thinking that could be that bottle के अंदर कुछ problem है, उसने 9 o'clock का जो blood आया था, 8:30 का जो blood आया था, उसकी सारी entry कर दिया, which was not transfused to the patient. When the matter gone to the police, normally 304A लगता था, लेकिन इस केस में क्या हुआ, my MD medicine doctor also got arrested because of the act of this particular guy, the RMO, and he was arrested not only for the medical negligence of 304A, but also for the forgery of a document, 468, 471, 473. Lots of section was put which become non-bailable offense, and my doctor have to face a lot of agony before we take a bail. So my friend, nursing home के अंदर criminal liability बहुत ही limited है, unless it has been done in consensus with you, by your paramedical staff, by your RMO, if you are not a treating doctor, if you are just a non-medico or otherwise not treated the patient. If you are a treating doctor, yes, your liability is going to be direct. No one can stop you. You have to face a dance because patient negligence का, जैसे कि आपको मैंने बताया, it is going to go to expert for opinion and then you are going to. So you need to be very careful when you are running a hospital, when you are running a nursing home.